Welcome to MatriXpliot, guys. Welcome to the Linux series. This is our second episode in Linux series. In last episode, we have done the basic installation and the basic commands, which are like ls, mkdir, cd, pwd, different kinds of commands like that. Further, we are going to discuss. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में कि एग्जैक्टली फ्लैग्स कैसे यूज करने हैं, एब्सोल्यूट पाथ क्या है, रिलेटिव पाथ क्या है, everything, each and every concept is going to clear in today's session regarding your commands. What are actually exactly flags? So let's start off our class. हम अपनी VMware start करते हैं. We'll start off the VMware. Here we go. I think I expect कि आप सब लोगों ने VMware डाउनलोड कर लिया होगा और कॉन्फ़िगरेशन कर दिया होगा और इसी के साथ साथ मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को टास्क दिया था, राइट? तो आई एक्सपेक्ट कि आपने वो कर लिया होगा. तो यस, हियर इज आवर टास्क. लेट्स रिस्टोर इट. ओके, सो we'll start off. I'll skip this version. Yeah, here only we have left, right? I'll just make it a big screen. Full screen. Yes, great. So ये टास्क था हमारा. टास्क 1. Let's create a directory of your name on desktop, then create the payload directory structure. ये आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना था. ओके, विल डू वन थिंग. अब मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये टास्क परफॉर्म करना है. होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा. जिन लोगों ने ट्राई किया है, कोई कोई सक्सेसफुल हो गया होगा. जिन्होंने किया है कमेंट में मेंशन करना कि यस आई हैव डन, कर दिया. जिनसे नहीं हो पाया उसके लिए, उनके लिए मैं हूँ. आई डू द टास्क. जस्ट सी हाउ टू डू इट, हाउ टू परफॉर्म इट. ओके, मैं ये टेस्ट डायरेक्टरी हटा देता हूँ. Okay? और ये टास्क था हमारा, राइट? हम टर्मिनल ओपन करते हैं. यहाँ पे एक नया टर्मिनल. अब मुझे डेस्कटॉप पे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो मुझे जाना पड़ेगा डेस्कटॉप पे, राइट? दैट इज सीडी. और मैं जब टैब यूज करूंगा, व्हेन आई हिट टैब, आई विल गेट अ सजेशंस ऑफ डिफरेंट डायरेक्टरीज, राइट, which are present in my current location. So यहाँ पे है डेस्कटॉप, राइट? So I'll just move into desktop. Okay. Yeah, one more thing. अगर मैं डेस्कटॉप को ऐसे लिखूं, डेस्कटॉप, see, it is giving me an error. I'll just make it a big screen on. Okay. So यहाँ पे जब मैं डेस्कटॉप ऐसे टाइप कर रहा हूँ, DESKTOP, डेस्कटॉप, सो इस वक्त ये मोमेंट पे ये मुझे एरर दे रहा है. व्हाट एरर? डेस्कटॉप नो सच फाइल और डायरेक्टरी, राइट? सो इफ आई लॉन्ग दिस, सी, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये डेस्कटॉप मेरा अलग है और ये डेस्कटॉप मेरा अलग है. भले ही दोनों डेस्कटॉप है, बट this D is small and this D is capital, right? So now what I have to do, for this state, everything in Linux is case sensitive. Got it? Case sensitive means अगर यहाँ पे कैपिटल डी है तो मुझे इस डायरेक्टरी में जाना है, तो मुझे एज इट इज जैसे का वैसा ही मुझे आई हैव टू राइट डाउन एज इट इज. ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू, cd space desktop. Now it will be work. Got it? So अब मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप में, राइट? और हमारा टास्क था create a directory of your name. I'll create a directory. So let's create mkdir MatriXpliot. Okay. So यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है अपने नाम की. I'll just move inside it. MatriXpliot. अगर मैं अपना पाथ चेक करूँ, so it is giving me home parent desktop MatriXpliot, right? अब मुझे इसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना है. Then create the below directory structure. So directory structure is like this. Directory. Inside this directory, I'll just open it so that you can visualize everything. इस डायरेक्टरी में dir1 dir2 क्रिएट करना है. dir1 में सब dir1, सब dir1, file1.txt. Okay.
सो अभी हम यहाँ क्रिएट करते हैं। अगर मैंने यहाँ एग्जीक्यूट कर दी कमांड तो ये डायरेक्टरी क्रिएट होगी मैट्रिक्सप्लॉइट डायरेक्टरी में, जो कि मैं चाहता हूँ। सो mkdir dir1। अब मैं ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ और फिर से मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ mkdir dir2। सो यहाँ पे dir1 dir2 क्रिएट हो चुके हैं, राइट। वन मोर थिंग, वन मोर वे आई कैन यूज, इट इज लाइक mkdir dir1 स्पेस dir2। ये कमांड भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग टू डिफरेंट कमांड्स फॉर क्रिएटिंग टू डायरेक्टरीज। यू कैन एग्जीक्यूट वन सिंगल कमांड टू क्रिएट टू डायरेक्टरीज। गॉट इट? मैं आपको ये भी करके बता देता हूँ। सो आई जस्ट रिमूव दिस डायरेक्टरी। रिमूव करने के लिए rm स्पेस हाइफन rf। ओके, dir1। अब रिमूव करते टाइम भी आप ये कर सकते हो, dir1 ऐसे रिमूव कर सकते हो और फिर dir2, और एल्स यू कैन गो इट लाइक dir1 स्पेस dir2। अब मैंने रिमूव कर दिया है तो ये मुझे एरर कुछ बताएगा नहीं कि इसने रिमूव किया है या नहीं, बिकॉज dir1 एंड dir2 डजंट एग्जिस्ट, राइट। सो उस पर कुछ टास्क परफॉर्म किया नहीं। ओके, तो हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं अलग वे से, जैसे कि एक साथ mkdir dir1 एंड देन स्पेस dir2। इससे एट अ टाइम टू डायरेक्टरीज क्रिएट होंगी सिंगल कमांड से। एंटर। सी, टू डायरेक्टरीज हैव बीन क्रिएटेड। सो इससे आपका टाइम बच गया, राइट। एंड दिस इज आल्सो नोन एज ऑटोमेशन। आपने एक कमांड में टू डायरेक्टरीज क्रिएट कर दी, राइट। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू क्रिएट sub dir1 in dir1, sub dir2 in dir2, राइट। अब हम फिर से जाते हैं अपने टर्मिनल पे। नाउ I'll just move inside dir1, okay, and then here I'll execute sub dir1, right। अब एंटर। अब dir1 में सब dir1 क्रिएट होनी चाहिए, राइट। क्रिएट हो गई है। अब सब dir1 में मुझे क्रिएट करना है सब dir1। सो cd सब dir1 mkdir सब dir, राइट। क्रिएट हो गई। अब सब dir1 में mkdir, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मूव इनटू सब dir1, राइट। अगर मैं pwd टाइप करूं तो यहाँ पे मुझे मेरा पाथ दिख रहा है। सो आई एम इनसाइड होम पैरेंट डेस्कटॉप मैट्रिक्सप्लॉइट dir1 सब dir1, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्रिएट करनी है क्या फाइल, राइट। फाइल 1.txt, राइट। एंटर। फाइल क्रिएट हो चुकी है। सो हमारा पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन के रेडी है dir1 का, राइट। आई जस्ट मूव बैक cd स्पेस डॉट डॉट cd स्पेस डॉट डॉट, राइट। अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, मैट्रिक्सप्लॉइट में, राइट। यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग लिस्ट करता हूँ, लॉन्ग लिस्ट मतलब हाइफन एल के साथ यूज करना, ls कमांड को हाइफन एल के साथ यूज करना। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट करता हूँ तो यहाँ पे dir1 और dir2 लिस्ट हो रही है, राइट। वी हैव जस्ट क्रिएटेड आर होल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इनसाइड dir1, जो कि ये बन के रेडी है, राइट। अब हम करने वाले dir2 में। सो वी जस्ट मूव इनसाइड dir2। यहाँ पे चेक करते हैं कुछ है या नहीं, देयर इज नथिंग। तो mkdir सब dir2, आई जस्ट मूव इनसाइड सब dir2 नाउ। अब सब dir2 में भी मैं क्रिएट करूंगा सब dir2, राइट। अब मैं मूव करता हूँ सब dir2 में, यहाँ पे लिस्ट करता हूँ देयर इज नथिंग इनसाइड सब dir2। सो अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ file2.txt, राइट। सो ये भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। सो इन शॉर्ट अपना पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। cd स्पेस डॉट डॉट cd स्पेस डॉट डॉट cd स्पेस डॉट डॉट। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ तो मेरे डेस्कटॉप पे मैट्रिक्सप्लॉइट नाम डायरेक्टरी
मैट्रिक्सप्लॉइट नाम की डायरेक्टरी बन चुकी है और इसमें पूरा मेरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन के रेडी है। सो हाउ टू चेक? 3 स्पेस मैट्रिक्सप्लॉइट, ये कमांड से आप डायरेक्टरीज के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है एंड तक लिख के आता है। सो दीज आर कॉल्ड एज एंड फाइल्स और डायरेक्टरीज। ओके, these are the end point of this directory. Got it? We can call it as these are the end points of this directory. Understood? Okay. So ये पूरी प्रोसेस हमने कुल मिला के 5 से 10 मिनट में कर दी, राइट? वी कैन डू दिस इन सिंगल कमांड। ओके, हम ये पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक सिंगल कमांड से। ओके, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो इट हैज बीन रिमूव्ड। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये आपका प्रीवियस टास्क था। ओके, दैट हैज बीन क्लोज्ड। राइट, अभी हमारा डेस्कटॉप और ये हमारा टर्मिनल। आप सभी को ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, जब आप विजुअलाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा हर एक चीज इन डिटेल। ओके, अभी मैं वो वाला पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक ही कमांड में आपको बना के दिखा देता हूँ, जो कि ये वाला था। राइट, ये वाला डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में बना के देने वाला हूँ आपको एक ही सिंगल कमांड में। सो दैट विल बी mkdir। हमें क्या डायरेक्टरी चाहिए? हम कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे, राइट? सो यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है मेरे नाम का डायरेक्टरी मैट्रिक्स प्लॉइट। उसके अंदर मुझे क्रिएट करना है dr1। dr1 के अंदर मुझे क्रिएट करना है सब dr1। सब dr1 के अंदर मुझे क्रिएट करना है सब dir1। राइट, अब ये सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मुझे क्रिएट करना है किसमें? dir2 के लिए। सो मैं इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा dir2। ये dir2 के लिए मैंने चेंज कर दिया। राइट, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, हमारी कमांड थोड़ी बड़ी होने वाली है। डोंट अफ्रेड, you will also get it how to do it, you can also get that thing। okay, just practice practice and practice। आप मेरे साथ डे 1 की वीडियो देखकर मेरे साथ लाइव क्लासेस करना, तो I'll guarantee you that you will get master in minutes। okay, but your dedication and consistency is the key। okay, that matters a lot। now ये तो हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन गया, बट इसमें फाइल्स बाकी है। राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज अ काइंड ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर वो चीज होती है जो कि आपके लेटर्स नंबर्स से अलग होते हैं, जो कि यूज होते हैं कमांड ब्रेक करने के लिए। राइट, रेजेस कैरेक्टर जो कि यूज होते हैं कमांड ब्रेक करने के लिए। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू यूज सेमीकोलन। इसका मतलब ये होता है कि मैं ये वाली कमांड ये कमांड यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ और न्यू कमांड स्टार्ट कर रहा हूँ। आई कैन गिव स्पेस और नॉट, इट डजंट मैटर। ओके, सो यहाँ पे फाइल बनाने के लिए मेरी कमांड है टच, और मुझे फाइल बनानी है इसमें स्लैश file1.txt। राइट, और फिर इसमें भी एक फाइल बनानी है जो कि रहेगी स्लैश file2.txt। राइट, सो ये पूरी कमांड बन के रेडी है। राइट, सो ये कमांड हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद ये पूरा का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन के खड़ा हो जाएगा डेस्कटॉप पे विद अ सिंगल कमांड। इट सीम्स टू बी अ वेरी बिग कमांड, बट इट इज वेरी सिंपल। हम ये सब कुछ करेंगे, मैं आपसे प्रैक्टिस करवा के लूंगा, सब कुछ करेंगे। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू कंसिस्टेंट, यू हैव टू वॉच द प्लेलिस्ट फ्रॉम द डे 1। ओके, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा। वीडियो डे 1 से देखकर फॉलो करना, सब चीजें अच्छे से पढ़ना। मैं जो भी टर्म्स यूज करता हूँ उसके ऊपर से अपनी तरफ से भी रिसर्च करना। आई गारंटी यू विल गेट मास्टर विथ मी विद इन अ मंथ। ये कोर्स हमारा पूरा मंथ चलने वाला है।
30 days, 30 episodes will be there, 30 seasons, everything, whatever you call. सब कुछ हम कवर करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक for beginners till expert, everything we are going to cover in Linux. Partition, how to create your own service, all. सब कुछ हम create करने, हम सब सीखने वाले. Okay, so I'm going to enter. Okay, so this error, why this has given us the error? Because we haven't used one thing that is called as flag in last session, in last video. I have explained you what is mean by flag, right? Flag एक ऐसी चीज है, flag is a thing which is giving your command a new functionality, a new super power, right? So हम सिर्फ manual पढ़ते हैं mkdir की. I know how to use it like mkdir, we have to do mkdir space hyphen p, इससे ये command work हो जाएगी, but क्यों? Why hyphen p flag is being used? मुझे कैसे पता चला? How did I come to know? Manual. For every command, whatever command, if you want to get information of the command, you have to open a manual for that particular command. So how will you open a manual for a command? man space mkdir. जिस भी कमांड की आपको मैन्युअल ओपन करनी है वो man डालना है यहाँ पे और फिर then you have to type mkdir and then enter. You will be entered into the manual of mkdir. A short description will be listed over here. mkdir is make directories, right? Now here a description will be like create the directories if they don't do not already exist. So ये है basic information, in detail information about the mkdir command. So, यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. Okay, first of all mkdir, and then if we execute like this MatriXpliot. तो बेसिक फंक्शन mkdir का ऐसा होता है. mkdir works like creating a end directory. अगर आपने ऐसा एग्जीक्यूट किया mkdir matrixploit slash dir1, so this mkdir command will try to execute, try to create dir1 directly without even creating matrixploit. So as we know, matrixploit doesn't exist. dir1 will give error, this command will give error. What error? mkdir cannot create directory matrixploit dir1 because no such file or directory, right? Now which file or directory? This one. Matrixploit doesn't exist, that's why it is giving us this error. And just clear your doubt, I know you will get a doubt. See mkdir matrixploit, अब मैं ये create करता हूँ और फिर ये command execute करता हूँ. Now it will not give me an error. Enter. See, अब matrixploit directory में dir1 create हो चुकी, right? तो फिर से sorry, I'll move into the desktop again. लिस्ट करता हूँ, मैं इसको निकाल देता हूँ matrixploit. Okay, so basically this is not a command. ll is an alias created with ls command. alias भी हम cover करेंगे next session में. I'll give you a task on alias. Okay, yeah. So if we list the thing, here is matrixploit. I'll just remove it. Remove करने के लिए command rm space hyphen rf. V is for verbose. I'll explain you why we use this thing. Okay, then matrixploit, enter. Okay, again मैं list करता हूँ. There is nothing on desktop. So I want to explain you what manual. We'll open a manual for mkdir. So यहाँ हमें दिखता है hyphen p flag. No error if existing parent, make parent directories as needed, right? So इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि हम फिर से ये कमांड एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ओके,
So what error it is giving? It is giving us mkdir cannot create directory, MatriXploit dir1, dir sub dir1, sub dir1, no such file or directory. अब इसका मतलब ये होता है MatriXploit dr1, sub dr1 and sub dr1. Now by default, mkdir will try to create sub dr1 directory. As we know, to create sub dr1, sub dr1 should exist, and to create sub dr1, dr1 should exist, and to create dr1, MatriXploit directory should be exist, right? So the main issue is with this directory. Our first directory is not present there. So all other directories are giving us error. See, mkdir cannot create directory, MatriXploit dr1. Again, here it is giving error, sub dr2. Touch is also giving us error because no directory structure exists, right? Okay. So we will mitigate this issue. We will solve this issue by simply adding -p flag. Okay. Now, what does this mean? It will tell mkdir command, this -p flag gives a superpower or new functionality to mkdir command that if you are getting an error, mkdir, if you are getting an error, what error you are getting? No such file or directory. So for which directory you are getting an error? For this creating this directory, you are getting no such file or directory. So create it. -p flag is adding a functionality that if mkdir command is getting an error, no such file or directory exists, then this directory, right? No such file or directory exists, then create this directory. Now mkdir will try to create this directory. Again, it will get an error. No such file or directory for this directory, dr1. Then it will try to create dr1. Again, it will get an error that no such file or directory exists for MatriXploit. Now it will try to create MatriXploit directory. So as it can directly create this MatriXploit directory, there will be no error. Then it will again try to create dr1. Now it will be created. Then it will again try to create sub dr1. Then it will try to create sub dir1. This is how the backend process is being done. Got it? ट्रस्ट मी, इतना डीप कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना डीप पेड सर्विसेज, पेड कोर्सेज में भी नहीं होता है. इफ यू फॉलो माय प्लेलिस्ट, आई विल गारंटी यू, you will get a quality content, and I will also get motivate if you guys support me, if you guys comment, if you guys subscribe. Okay, and if you guys show me support. Okay, don't worry, you will get to in just 30 days. बट उन 30 डेज में आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद से भी एक्सप्लोर करना है. इफ यू डोंट एक्सप्लोर फ्रॉम योर साइड and you don't do whatever task I'm going to give you at the end of each and every session, then it will be impossible. It will be next to impossible that you will get master or you will get to know Linux. Okay. Okay. Anyhow, we'll proceed with our stuff. So यहाँ पे हमने -p flag add कर दिया है, and we are on desktop, right? And हमारी our directory structure starts with MatriXpliot, and then dr1, sub dr1, then our that's directory structures goes on, right? So I'll just hit enter and see whether a directory is created. Yes, it has created. I'll just check whether it is correct or not. I'll just use three MatriXploit, enter. And yes, we have got our directory structure in just one command using a single flag. So now you are getting the thing that how flags are important. Okay. In last session, I forgot to tell you ls-l flag is for
long listing the stuff. ls hyphen a, right? It is showing us dot and double dot. Okay. Now, what does a mean? A means it is used to show hidden files. If I open a manual, simple. If you are getting any doubt, just open a manual and check for the flag. आप मेरे साथ parallelly कर रहे हो. If you are doing all the practicals parallelly with me, then it's well and good. You can directly check in the manual whatever command I'm executing. I'm not explaining you all the stuff. So just explore by yourself and let me know in comments if there you need any improvement or anything like that. I will make sure that that will be implemented in next session. Okay. So hyphen a, it is telling us do not ignore entries starting with dot. Now, what does this mean? Now I am on desktop, right? अगर मैं यहाँ पे create करता हूँ mkdir dot hidden directory. mkdir command is used to create directories, right? So if I create this directory with name as hidden, it will be created on desktop, right? But I'll just remove it. Okay. अगर मैं create करता हूँ, if I create mkdir dot hidden, whatever directory name, you can give anything. Like let's say directory mkdir dot direct, enter. See, it will not display on the desktop. You can view it from terminal. And how? You can view it with ls space hyphen l a, enter. See, dot directory is there. MatriXpliot is also there, but we are visualizing MatriXpliot, but not the dot directory because that is hidden. Why it is hidden? Because whatever entry starts with dot in Linux, that is considered as hidden. Okay. And this to view the hidden files, hyphen a flag is used. All. See, it is listing me, right? And if I want to list all the hidden directories and long list all the hidden directories with, with the hidden directories. So what I'll do, space hyphen l a. हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है मैट्रिक्सप्लॉइट का. See, it has done with simply this command ls space mkdir with hyphen p flag. Hyphen p flag is for creating parent directories, especially, right? So flags का importance आप जान चुके हैं अभी. So we are going to learn more about path. Okay. Now what does mean by path? pwd. तो यहाँ मुझे मेरा path दिख रहा है. That path is starting from slash home slash parent slash desktop. Right? That path is starting from slash. So what does this slash mean? What does this home mean? What does this parent mean? I mean, we have looked only for this thing, right? Slash home slash parent slash desktop, right? So this parrot, what does this parrot over here doing? That is my username. Okay. If I execute a command, who am I? It will going to show me which user am I now. And I am right now parrot user. Okay. So right now I am a parrot user. That is the name of the user. Okay. So if I execute pwd, I'm getting this path as an output. I'll try to move back. That is cd space dot dot enter. And if I execute pwd again, now I am inside this parent directory. I'll long list the stuff, whatever there is in my default home directory. Okay, this is the default home directory of this user, this parent user, especially. And these are the directories present over here, right? Now, I'll try to move more to the previous directory, that is home directory. I'll try to move to the home directory. cd space dot dot enter. If I execute pwd now, I'm inside slash home. Now I'll list the content of home directory. ls space hyphen l. There is one directory because there is one user which I have created, that is parent user. Okay.
I'll move again back, cd space dot dot, enter. Now I'll list the stuff over here. I am inside slash, right? I'll execute pwd, see, only slash I am getting. I will list the stuff now, and what stuff I am getting? Bin, food, dave, etc, home, all this, init rd.img, lib, media, mnp, opt, doc, root, all these directories are default directories. They are already configured, pre-configured of Linux. Okay. So I'll give you one task for next session. You have to check the details of these directories, each and every directories, and whatever you feel these are important, whatever directories you feel important, just mention in the comment that these directories are like for this purpose and they are important. Actually, all of the directories are important, but yes, most of the directories you are not going to use as a fresher. If you are applying to any company, you are not going to interact any of the most of the directories. Only some directories are important in this. I'm going to explain you the work of each and every directories. Linux is also known for working on its file system. Okay, Linux use file system for handling each and every processes. So why it is known as, why it is called to be using file system, everything I'm going to explain. But just get into uh, the thing that we are on slash. Okay, now we are on slash. Now, if I try to move back in the previous directory, what will happen? Nothing. Got it? If I execute pwd, see, I am still on slash. You can see it over here as well. Okay. Again, if I do cd space dot dot enter, still nothing happens. Right? Why? Because slash is the only thing from where everything has started. Like the theory of Big Bang, right? It says that everything was a dot initially, and then it has started from a dot, from a particle, right? So in Linux, this is your particle slash. Slash is the thing from where everything has been started. Okay. If I do tree over here, okay, I just do tree over here and I'll make it like this. See, at the very beginning, you will have slash, then you have bin directory, then boot directory. Then inside this boot directory, there is config. Inside this boot, you have grub fonts. Inside this font, you have this thing. All this directory structure. If I space, if I use space, and then here you're going to see Dave directory. Inside this Dave, you have AutoFS, block, bus, BRTFS control. All these kinds of directories are there. Okay, I'll just leave it. So these are all the directories directly present under the slash. And whatever user you are going to create, whatever user you are going to create, they will not have by default permission to edit any of this file because they are owned by root user. Now, what is root user? This we will going to cover in user management session. Okay. Till now, get the thing that these files, these directories are directly present under slash is not accessible, or we cannot, a local user cannot modify these files. Okay. Local users home directory, default home directory is under home. Okay. So I'll just do pwd. I'm on slash. I'll list, I'll only list it. These are the directories, right? I'll move into home. So cd space home, enter. I'll again do pwd. I'm inside home. Here, what is there? Parent directory. I'll move inside parent directory, enter. ls space hyphen l. Okay. Now I'll move inside desktop. So basically, this is our next one.
Now here, whatever a local user, that is parrot in my case, in your case, it may be whatever name you have given, that will be the name displayed over here. Okay. So he will have full access on the files, whatever present over here. Got it? Now, the reason, the motive behind explaining you the stuff in this class is that I want you, I want to explain you guys that this path starting with slash, now you got what is slash, right? Whatever path starts with slash, that is called as absolute path. Okay? What it is called as? It is called as absolute path. Okay? Let's say I'll list the stuff that is matrix exploit over here. I'll just remove it. Matrix exploit. Okay. Now, if I want to create a directory on desktop, I can directly do it like this. Matrix exploit and enter. The directory has been created, right? There is one more way you can create this matrix exploit directory on desktop. That is called as absolute path. Okay. Whatever path you were using till now, that is called as relative path. Okay. So there are two paths. One is absolute, another one is relative. Now, using absolute path, how you can create a directory, mkdir space, you have to start the location from slash. That is the only condition for mentioning an absolute path. So slash home, where you want to create desktop, right? On desktop, on this user's desktop. So where this desktop is present under home, under slash, right? So you have to mention slash first, then home, then slash, then here you have to continue the username, whatever username it is given inside that home directory. There is parent directory. Inside that parent directory, you have to navigate to desktop. You have to create. You want to create on desktop, so you have to navigate to desktop directory. Then here you can execute. You can give a name like MatriXpliot and enter. See, same command, same work it is doing, right? But this is the absolute path, and this is your relative path. Whatever stuff you are mentioning without slash, that is called as relative path, and whatever stuff, whatever path you are mentioning with slash, that is called as absolute path. Got it? Now, your question will be like, what if I do it like this? But if you do it like this, it will going to create this directory under slash. And where is our slash? That previous one. I'll just execute it. It is giving me permission denied error because, as I've told you, slash user, this local user is not having by default permission to create anything, to modify anything directly under slash. Okay. So in order to execute it, I'll just execute it. So I haven't explained you what is sudo and all. Just leave it. So it has created now. I'll just move back to slash. Okay. If I list the stuff, here you're going to see your directory, right? So here it is, MatriXpliot. It has created, right? And it has created directly under slash. Got it? I'll just remove it. Again, I'll not be able to remove it because permission denied as I'm local user. So it will give me error as permission denied. It is obvious. So I have to use it with sudo space enter. Okay. I'll explain you what is sudo and everything like that. Okay. One more thing. Now I am on slash, right? So I want to get on to my default homepage directly. There is one way you can do it like cd space slash home slash parent and enter. You can do it like this. If I mention path like this, home and parent, this path will be known as relative path. And if I
type the same path, but if I start with slash, I can start this path directly with slash because home is existing. We are on slash and home exists on that current directly under slash. So I can write this both the path and it will not give me an error. Okay, this is one way, absolute path and relative path. Only for moving on to default homepage of particular user, you can use this trick, that is CD. If you execute only CD without any path or without anything and enter, see this slash has been changed to title symbol. This is called as title symbol. Okay. If I do PWD, I have been navigated to my default home page. If I list ls space hyphen l, save. Okay. So I have navigated directly on the home page of my current user. Okay. So absolute path and relative path, both the terminology, I think, I hope you guys are clear with that thing. If not, mention in the comment section. I'll do it in more detailed way, and whatever stuff you want to get it from me, just mention it in the stuff. I'll make sure to provide it in next upcoming video. That will be on next day. Okay, great. Again, live classes. If anyone of group, anyone is interested in live classes, I'll be taking the live classes as well. Just mention in the comment. We will start this session, this Linux series as a live series. Okay, live streaming. I'll start the live streaming. So we will proceed with the live streaming. Until then, I'll be posting these videos, recorded videos. Okay, fine. Now coming to your task, right? I'll do one thing. I'll just move on to desktop and find on desktop Linux dot txt nano Linux. Great. Oh, I'll just make it a little bit bigger. Okay, so your task two. I'll make an entry of task one as well. Task two is you have to remove the previously made directory structure, right? Again, you have to make the same directory structure, but this time with some conditions. Okay, and those conditions are create the whole direct directory structure absolute path. Okay, that is all the paths you mention in your commands should be starting with the slash. Okay, this is your task. I hope you guys will do it, and I don't think so you will face any kind of issue. And in next session, we will proceed with ls. What is ls? Okay, so we'll wind up. That's it for today's session. We'll wind up for this class. Bye, guys. Meet you in the next session.